This class is supposed to be recorded, so be aware of it and don't make any sort of disturbance in the class. Good morning, sir. Good morning. Who's this? Sir Sachin. Sachin. So only this much is the attendance of this group right now. So shall we start now? Good morning, sir. Good morning, Dhruv. It is being visible to you, the screen? Yes, sir. Yes, sir. We'll pick up your pen and notebook and we'll start up with empirical formula and molecular formula. So empirical formula and molecular formula. The empirical formula, as you know, is the simplest whole number ratio of the various atoms present in one molecule of a compound. So empirical formula वो formula होता है जिसमें simplest whole number ratio of the atoms present होता है एक molecule में किसी भी compound के. So please write it down this. The formula which gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound is called empirical formula. Fine? Yes, sir. Yes, sir. So note down this. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले लें जैसा कि इस बुक में मेंशन्ड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दैट इज आपको पता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है H2O2. बट अगर हम इसके एम्पिरिकल फार्मूले की बात करेंगे देन वील टेक 2 एज अ कॉमन एंड द एम्पिरिकल फार्मूला विल बी लाइक दिस HO. Fine. So this is for the example empirical formula of hydrogen peroxide is HO. It represents that the hydrogen and oxygen are present in the ratio 1:1. Fine. Yes, sir. ये बात आप Yes, लोगों को sir. क्लियर हो गई ना कि जैसे अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होता है H2O2 होता है. फाइन. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा H2O2 होता है, लेकिन अगर हम एम्पिरिकल फार्मूले की बात करते हैं तो व्हाट वी यूज टू डू,
we take this 2 as common, and the empirical formula will be like HO, where we have taken 2 common. Fine, simple. इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे अगर हम बेंजीन की बात करें तो ये सबको पता है कि बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C6H6. सो अगर यहाँ पर हम 6 कॉमन ले लेते हैं तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बिकम लाइक CH, वेयर द बेंजीन एटॉमिक रेशियो इसमें कितना होगा, 1:1 का. 1:1. Fine. Now the second term, that is Can you take example of C6H12O6? C6H12O6. H12O6. Take 6 Yes, common sir. from it. Y divided by 6. Yes, sir. Yeah. Okay. So अगर हम molecular next की बात करते हैं, so many students are coming too late in the class. Why this is happening? The class time is was from 7:30, and still students are coming to attend the class. It is 7:37 now. And keep one thing in your mind, आपको दोबारा इस क्लास को ज्वाइन करना है at 8:10. Fine, by the same link. Clear? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. क्लास को दोबारा ज्वाइन करना है. फाइन. अब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वन मॉलिक्यूल के ऑफ द कंपाउंड. फाइंड द फॉर्मूला व्हिच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स of various element present in one molecule of the compound is called molecular formula. So you need to note it down, these definitions, because these are important for your examination point of view. Sir, done. Yes, sir. अगर हम इसका एक एग्जांपल ले लें, जस्ट अ मिनट. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखेंगे तो दैट इज H2O2, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं. और ऐसे ही अगर हम अभी हमने बेंजीन को डिस्कस किया था इससे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला में, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट विल बी C6H6, जिसमें बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के पास 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. क्लियर? Yes, sir. These are some examples. You noted down these examples, like hydrogen peroxide, empirical formula is HO, molecular formula is H2O2. Benzene, the empirical formula is CH, and the molecular formula is C6H6. Glucose, the empirical formula is CH2O. देखिए जो कोई one student was asking to me, what will happen if we'll take the molecular formula C6H12O6. See here, in the case of glucose, हमने 6 को कॉमन ले लिया है, and the empirical formula will become like CH2O. Same with sucrose, C12H22O11. So यहाँ पर अगर हम बात करते हैं empirical formula and molecular formula both are same. क्यों सेम होंगे बेटा? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है. क्लियर? एंड नेप्थलीन की अगर हम बात करें दैट इज C5H4. तो यहाँ पर आप देखिए हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो चाहिए. वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 एंड इट विल बिकम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C10H8. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. You can ask the question. Now we'll move further.
Come on this side. Relationship between empirical formula and molecular formula. Write down this question. Write the empirical formula of the compound having the molecular formula. These are the molecular formulas, and you need to write down the empirical formula of these molecular formulas. First one is C6H6. Second one is C6H12. Third one, hydrogen peroxide. Fourth one, sodium carbonate. Then another is B2H6. So this is the question for you. Empirical formula हमको इनका बताना है, ये सारे कंपाउंड्स जो लिखे. Note it down. Sir, please wait. Okay. So as you finished, let me know that you have noted down the question. Done? No, sir. No, sir. Our relationship between empirical formula and molecular formula. देखिए ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है. Molecular formula equals to n into empirical formula. So अगर जब भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है molecular empirical formula का, so first हम क्या करते हैं, n को कैलकुलेट करते हैं और जो वैल्यू आती है n की उससे मल्टीप्लाई करते हैं empirical फॉर्मूले में. ठीक है, where n is a simple whole number और इसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है. फाइन. और n को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन empirical formula mass. So please note it down, this formula only, n equals to molecular mass upon empirical formula mass. अगर आप एक एग्जांपल देखिए, हमें मॉलिक्यूलर मास पता हो बेंजीन का which is 78 एंड empirical formula हमने अभी देखा था कि बेंजीन का CH होता है. So the empirical formula mass अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें, the mass of the carbon atom is 12, the mass of the hydrogen atom is 1. So if we'll sum up these two masses, it will come out, the empirical formula mass will be 13. So what we'll do to calculate the value of n, we use this formula, molecular mass upon empirical formula mass. And molecular mass is 78, empirical formula mass is 13. So if we'll divide 78 by 13, we'll get 6. So to get the molecular formula, we'll multiply the empirical formula with this 6, and it goes like this, 6 into CH, and it will become C6H6. अब एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, keep this thing in your mind, कि if the value of n comes 1, अगर एक आती है वैल्यू, 1 आती है वैल्यू किसकी, n की, तो empirical formula और molecular formula same रहेगा. Because if you multiply by 1 in empirical formula, you will get the same formula as molecular formula. Fine? Yes. Put it down. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स हमें करने हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. empirical formula का बेटा, I told you earlier also that this question is very important for your examination point of view. Usually it comes in the examination, so be very clear with your concepts. Right? सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन जब this question will be given to you whenever, होगा क्या, इसमें आपको different elements की percentage given होगी. Atomic masses हो सकता है given हो सकता है given ना हो, because it is being assumed to you that you guys are aware of atomic masses of the elements. So
जो फर्स्ट स्टेप इसमें हमें करना है, दैट इज जो परसेंटेज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, द फर्स्ट पॉइंट, Yes, स्टेप sir. 1 इज, स्टेप 1 जो परसेंटेज गिवन होगी उससे हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ द एटम्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज होगी उसको डिवाइड करेंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। सो द फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मोल्स ऑफ द एटम्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, परसेंटेज जो उस एलिमेंट की गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट के साथ। ठीक है, अब सेकंड स्टेप, Yes, sir. जैसे ही हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, कैसे कैलकुलेट करें फिर से एक बार आप समझ लीजिए। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को डिवाइड किया हमने एटॉमिक मास से और हमें नंबर ऑफ मोल्स उस एटम के मिल गए। जैसे ही उस नंबर के, सपोज 3 to 4 हमको एलिमेंट्स गिवन है जिनकी परसेंटेज गिवन है, हमने उन सबके मोल्स निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ गए, तो उन मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, किसकी, एटम्स के मोल्स की जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स की के मोल्स की वैल्यू को डिवाइड करेंगे एंड वील गेट व्हाट, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स। क्लियर, सबसे छोटी वैल्यू से। अभी ये क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इतना समझिए कि जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी उनको। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, स्टेप 3 में हमारे पास जो भी वैल्यूज आई हैं, आप डिवाइड करके सबसे स्मॉल नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू आई थी उससे हमने रिमेनिंग को डिवाइड किया। रिमेनिंग को डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, जरूरी नहीं है वो वैल्यूज होल नंबर हो, वो वैल्यूज फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, नियरेस्ट होल नंबर में, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेप नंबर 4, हम सारे एलिमेंट्स की क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को नोटेड डाउन करेंगे और जिस एलिमेंट का जो भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया है वो उस एलिमेंट के साइड में कॉर्नर पर हम उसको लिखेंगे, और ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। फाइन, अब एक एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल नोट डाउन करिए जरा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, its percentage composition is 92.4% carbon, 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. इसका molecular formula निकालना है हम लोगों को, और ये किस तरीके की आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे इसमें। The first column will be of name of the element, second will be percentage, third will be atomic mass, fourth moles of atom, fifth mole ratio or atomic ratio, and seventh simplest whole number ratio. Clear, बना ली टेबल, Yes, sir. टेबल बन गई। No, sir. I'm not getting your reply, so how could I know that you are, No, sir. as you construct this table, let me know. Okay, sir. Done, beta? Have you all constructed this table? No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Let me know when, जब आपका सब लोगों का ये कंस्ट्रक्ट हो जाए।
Nana, have you done it? Yes, I done. Nana, do one thing, please. If you have the recording options in your Zoom meeting, please record this class as I am recording. But for the precautionary step, I'm telling you this, that if it is possible for you, please record this class. Okay, sir. So you need to allow me for that. Okay, how? I'm not pretty much aware of as far as this Zoom meeting concepts are. So you can go in the options and then like the recording option, you can give me permission because Okay. without giving permission, I can't. Okay, okay. Let me see to it. सबका टेबल बन गया बेटा ये? Yes, Yes. sir. अब एलिमेंट की साइड पर आप क्या करिए, आपको दो एलिमेंट इस क्वेश्चन में गिवन है, कार्बन, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? Hydrogen. Hydrogen. Note it down those two symbols on the side of element, carbon and hydrogen. फाइन. कार्बन के आगे कार्बन की परसेंटेज को नोट कीजिए, हाइड्रोजन के आगे हाइड्रोजन की परसेंटेज को नोट कीजिए. Now in the third column, you need to note it down the atomic masses of carbon and hydrogen. Note it down. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now moles of atom कैलकुलेट करके बताइए जरा, कार्बन के कितने आए एंड हाइड्रोजन के कितने आए? 7.7 and 7.6. 7.6. 7.7 and 7.6. So simplest whole Yes, number sir. ratio बेटा क्या आएगा इसका? The 1.01 and 1. Beta, we are talking about simplest whole number ratio. Fine, it is the mole ratio which comes out 1.01. And कैसे करा हमने? यहाँ पर देखिएगा, हमने elements moles of atoms calculate किए, 7.7 and 7.6 आया. 7.6 is the smallest number in between these two. So 7.6 से हम इन दोनों को divide करेंगे. So 7.7 divided by 7.6, it comes out 1.01, and 7.6 divided by 7.6, it comes out 1. So we'll convert these. अब जो हमारे पास ये atomic ratio आया है यहाँ पर, इसको हम convert करेंगे simplest whole number ratio में. So 1.01 will become 1 and 1 remains 1. Clear? Got it? Yes, sir. So जो simplest whole number ratio आएगा कार्बन और हाइड्रोजन का, that is 1:1, and the molecular empirical formula will be like CH. Clear? Because Yes, sir. Now molecular formula हमें इसका कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, empirical formula का मास निकालना पड़ेगा, and mass will be 1 into 12 plus 1 into 1, which as it is showing here, it will come out 13. Clear बच्चों? Yes, sir. और molecular mass उस compound का given है question में, that is 78. Now we have to calculate the value of n. Formula क्या बताया था n की value calculate करने का? So empirical formula by molecular formula. Molecular formula mass divided by empirical formula mass. Molecular formula by empirical formula. Fine. So calculate the value of n. So 6. 6. Now we need to multiply the empirical So the formula compound will be with this 6, C6H6. and the molecular It would be formula will 10. come out
C6H6. Clear? Yes, sir. Yes. Now, note it down. Beta, this question is very important for your examination point of view. वेपर डेंसिटी के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो प्लीज मेक श्योर कि हम ये क्वेश्चन बिल्कुल सही से कर लें. सेकंड वन, एग्जांपल नंबर 16. An organic compound on analysis gave the following percentage composition: carbon 57.8%, hydrogen 3.6%, and rest is oxygen. So टेबल बनाइए. टेबल आपको फिर ऐसे ही बनानी है. एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, moles of atom, mole ratio, and the third one is simplest whole number ratio. Last one. Done? No, sir. And we'll discuss it again in the class tomorrow. Okay? Yes. Yes. So if you have any sort of doubts related to this topic, ask me in the class tomorrow and I'll clear all the doubts. Here also I'm trying to clear all of your doubts, but if some remains, ask me in the class. So this question is, ये question note कर लिया आप लोगों ने? No, No, sir. sir. Note it down this. Sir, note it down. Note it down. Now construct this table again. Element, percentage, atomic mass, moles of atoms, mole ratio or atomic ratio, and the last one is simplest whole number ratio. हो गई table construct? Yes, sir. Yes, sir. Now note it down the element name. कौन कौन से हैं? Carbon, hydrogen and oxygen. Carbon की percentage 57.8, hydrogen is 3.6, and जो remaining बचेगा that is oxygen. Tell me how much oxygen is present in this compound? 38.6. How much? So 38.6. 38.6. 38.6. Now, in the third column, note it down the atomic weight of these. So carbon ka atomic weight 12, hydrogen is 1, and oxygen is 16. Clear? Yes. And the next column, we need to calculate the number of moles. So हमने formula भी कराया, given weight upon molecular weight. So given weight, we'll take it as percentage, and atomic weight we know. No. तो कितना आया मुझे बताइएगा जरा. Number of moles कितने आए? Carbon The के carbon is 4.81. 4.81, hydrogen is 3.6, and oxygen 2.2. 2.4. 2.4. 2.4. सबसे smallest कौन सा है? That is 2.4. Yes, sir. Divided all the three with 2.4. So मोल रेशियो कितना है आपका?
Tell me the mole ratio of carbon, hydrogen, and oxygen. Sir, 2, 1.4 and 1. 2, 1.4 and 1. fine. Beta, now see Yes, this sir. step, the last step. What we'll do, we'll round off this 1.49 and it will become 1.5. So C4H3O2. C4H3O2 is the O2. right empirical formula. So जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, take this. हम इसको round off करेंगे. सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल रेशियो को. It will become 1.5. Then we'll multiply it by 2. It will come out 3 simplest whole number ratio. अब क्योंकि मैंने इस नंबर में 1.5 में I have multiplied with 2, so I'll multiply in rest of the mole ratio with 2. So carbon का simplest whole number 4 आ जाएगा and oxygen का simplest whole number 2 आ जाएगा. So why we are multiplying with the 2? Beta, to convert this into the simple whole number ratio. This is 1.5 na? It's not whole number. Yes, sir. So to convert it into whole number, we need to multiply it by 2. और जब मैंने इस we have multiplied by 2 in this number, so we need to multiply क्योंकि हमको रेशियो सेम रखना है. जब मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है, so जो और मोल रेशियोज आए उनमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा to keep the ratio same. Fine. So carbon simplest whole number 4, Yes, sir. hydrogen का 3 and oxygen का 2. Clear? So the empirical formula will come out C4H3O2. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, we sir. need to calculate the empirical Yes. formula mass. So 4 into 12, 3 into plus 3 into 1 plus 2 into 16. It comes out 83. Empirical formula mass. And we need to remember this formula. If the vapor density is given to you in the question, to get the molecular mass, you need to multiply that vapor density with 2. Clear? Yes, sir. So molecular mass हमारा कितना आ जाएगा? 2 into vapor density. Vapor density is given us to 83 and it will come out 166. Got it? So why did we multiply vapor density by 2? I'm not getting you, beta. Sir, why did we multiply vapor density by 2? Beta, it's a formula. This is the formula. To calculate the molecular mass when the vapor density is given to you, you have to use this formula 2 into vapor density. Okay, sir. Fine. So now we need to calculate N. N कैसे calculate करते हैं? Molecular mass divided by empirical formula mass. So molecular mass is 166. Empirical formula is mass is 83. So the value of N will come out 2. So 2. Fine. Now we can easily calculate the molecular formula by multiplying empirical formula with this 2. Get it? Yes, sir. बेटा आपको सेम लिंक से क्लास को रीज्वाइन करना है आफ्टर 4 minute 30 seconds. Fine? Yes, sir. हाँ? हाँ. ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे 61. I'm not telling you how to do it. Note it down this question. Four gram of copper chloride on analysis was found to contain 1.890 gram of copper and 2.110 gram of chlorine. What is the empirical formula of copper chloride?
कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई बताएगा मेरे को? Anybody can tell me how to solve this question? Yes, sir. First, I need to calculate the percentage of these elements. Yes, sir. So first you have to do the total of the solution and then Okay. Then multiply by and then the quantity of copper upon the total. फॉर्मूला क्या बताया quantity था of बेटा आप copper. लोगों को? फॉर्मूला क्या बताया था क्लास में टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज? गिवन वेट अपॉन So given weight upon mass of solution into 100. प्लस, Mass of solution मैंने आपको एक into फॉर्मूला 100. बताया था बेटा कि WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 बताया था. अगर A Yes, की sir. परसेंटेज कैलकुलेट Yes, करनी है sir. और B की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, देन WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. निकाल लीजिए आप. अगर हमें Yes, sir. कॉपर का निकालना है तो कॉपर का कैसे निकालेंगे? 1.890 डिवाइडेड बाय 1.890 प्लस 2.110. 2.110 इंटू 100. कैलकुलेट करके बताइए कितनी आई परसेंटेज इसकी? So 47.25. So 47.3. So 47. 47.3 is the right answer. Fine. Now the calculate the percentage of chlorine. Sir, 7.4. it will be 52.7. कितना बेटा? 52.7%. 52.7. Okay. Sir, 52.7. 52.7. Now we know the percentage of these elements. So construct that table again. Element, percentage, atomic mass, moles of atoms, mole ratio, and simplest whole number ratio.